This is video number 4 in the series of ratio and proportion, and this video is going to be very important not only for ratio and proportion problems but also for data interpretation problems. So comparison of ratios is one thing जिसके साथ students हमेशा से ही struggle करते रहते हैं. So I'm going to talk about one or two methods, that's it, and इसके साथ ही आपके सारे के सारे problems बन जाएंगे. So my very first problem out here for you is how do we compare these values which are written over here. 1 over 2, 2 over 3, 3 over 4, 4 over 5. So I would like you to compare 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, and so forth and so on. It is going up to 8 by 9. And the question is which one is the bigger, right? एक तो डेसिमल निकालना आप छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होने वाला आपका, क्योंकि यहाँ पे तो सिंप्लीफाई कर लोगे. when you will be having bigger values, वहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगी. So before I talk about this one, I have got two very important things to talk about. One is when you have got denominators as same. When your denominators are same, then what are you gonna do? Say I have got something like this. I have got 4, and then this is 3, and then this is 2, and then this is 4. Which value do you think is the bigger one over here? This value, if you find out the fraction, this one comes out as 0.75. And how about this one? This is 0.50. So which value is the bigger? The bigger value is this one. So when your denominators are same, then higher is the numerator, higher is the value. If I have to find out something like this, I have got 15, and then 11, and then 15, and then 13, and then 15, and then 17. Which value is bigger over here? Because denominators are same, hence 17 over 15 is going to be the largest. Why this is going to be the largest? Because numerator of this fraction is the largest. And which one is going to be the smallest? 11 by 15. Why? Because 11, which is in the numerator, is the smallest of all these three numerators. So probably you're understanding what is that I'm saying. My first case is when the denominators are the same. Write it down in your copy. When the denominators are same, higher is the numerator, higher is the value. Now the second situation, when numerators are the same, say something like this, say something like 6 by 5, and then 4 by 5, and then no, we have to make numerator same. This is going to be 6 by 5, and then 6 by 4, and then 6 by 3. Now my denominators are different but numerators are the same. What is going to do? What should we do in this case? If you find out the fraction of this value, this is going to be 1.20, and this is going to be 1.50, and this is 2. So this is the largest one and this is the smallest one. So when numerators are the same, then lower is the denominator, higher is the value. So 3, 4, and 5. Look at these values that are there in the denominator. The lower is the denominator, higher is the value. So these are the two things that you're understanding. So these are going to happen when you have got fractions where either numerators are same or denominators are same. कभी कभी ऐसा होगा कि ना तो न्यूमरेटर सेम होगा ना डिनोमिनेटर सेम होगा. फिर उस केस में क्या करेंगे, तो फिर उसी को हम देखते हैं यहाँ पे. So my first case was when denominators are the same. When denominators are the same, then higher is the numerator, higher is the value. And when numerators are the same, then lower is the denominator, higher is the value. But what are we going to do in such a situation? In such a situation, you have got half, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6. Neither the denominators are same nor the numerators are same. But in this situation, what we could do, understand the difference between denominator and numerator is same in all of them. Half, 1 by 2 by 3, 3 by 4, so forth and so on. In all these problems, the difference between denominator and numerator is same. So this is what? 4, 5, the difference is 1. 5, 6, the difference is 1. 6, 7, the difference is 1. 7, 8, difference is 1. This is difference 1. So in all these values you have got the same difference, and if that is the situation, then you should be saying over here, higher is the numerator, higher is the
numerator, higher is the value. Higher is the value. Do you understand this thing? So on this slide we talked about three things. So this is what I have written. My third rule is written over here. The difference between the denominator and the numerator is same. If it is same, then higher is the numerator, higher is the value. The first two cases I have not written. Probably I am assuming that you have understood them. Let us go ahead and try to solve these kind of problems. Which of the following is the largest? अब ना यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी लोगों को लगेगा कि यार ये तो फ्रैक्शन करने वाला है, बट ये फ्रैक्शन वगैरह करने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है. So you have got 9/17 and then 11/19 and then 23/31 and 13/21, and you have to find out which is the largest. So is it very closer to the third rule that we just talked about? Because the difference between numerator and denominator, look, in all these cases is the same. Is it 8 over here? Is it also 8? This difference is also 8. This difference is also 8. So the difference between numerator and denominator is same. And then what did you learn? You learned that higher is the numerator, higher is the value. So 23/31, this is going to be the largest value. And then 13/21 is the second largest value, and then you have 11/19 and then 9/17. You don't even have to pick up your pen. Do you have to pick up your pen? अगर आपने इस मेथड से प्रॉब्लम को नहीं लिया और अगर कहीं कुछ एलसीएम का मेथड लगाना शुरू कर दिया, दिस प्रॉब्लम विल गेट elongated, and we don't have to do that. But the difference between denominator and numerator will have to be same to apply this shortcut. Now we have got 8/9 and 11/13. Over here the difference is 1, and then over here difference is 2. So there are three cases we just talked about. 1, when the denominators are same. 2, when the numerators are same. 3, when they are not same but the difference between denominator and numerator is same. Now you are getting the fourth case. What is this fourth case? When the difference between numerator and denominator are not same. अगर ऐसा है, so what is that we should be doing? एक तो वो काम हो सकता है, वो काम क्या हो सकता है कि आप 8/9 को कुछ ऐसा करो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो जाए. यही आपने कभी किसी ने तो सीखा होगा. सो आई से दैट व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. If I multiply numerator by 2, it becomes 16, and denominator by 2, it becomes 18, and this value is 11/13. Now the difference between denominator and numerator in this case is 2. आप बड़ी आसानी से बोल दोगे कि 16/18 is more than 11/13, and hence this one is the bigger value. एक तो ये केस हो गया. But this is not advisable. Listen to my method. What I'm gonna say. This is one method. What is other method? जहाँ पे पेन में कुछ उठाने की जरूरत ना पड़े, और इसी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो. 8/9 and then 11/13. And I say do this. Do the cross multiplication. So if you cross multiply, this becomes 8 into 13, and this becomes 11 into 9. So 11 into 9 comes out as 99, and 13 into 8 is going to be how much? 104. Is that okay? 104 is bigger than 99, and hence 8/9 is bigger than 11/13. Did you understand this? What did I say? Do the cross multiplication. 13 into 8, 9 into 11. और ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट है. ये बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सिंप्लीफाई करता है ये. तो यहाँ पे आ गया 104, यहाँ पे आ गया 99, एंड बिकॉज 104 इज बिगर देन 99, आपका ये वाला जो फ्रैक्शन है वो इस वाले फ्रैक्शन से तो बड़ा है. कोई न्यूमरेटर नहीं लेना, कोई डिनोमिनेटर नहीं लेना. अच्छा, ये जो हमने यूज किया था ना कि डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर सेम, अब आप ये देखो कुछ ऐसा, मैं बोल दूं 3/4 एंड 4/5, इसमें कौन सा बड़ा है? नाउ यू अंडरस्टैंड इसमें से कौन सा बड़ा है, आप देख के बता पा रहे हो, क्योंकि डिफरेंस दोनों में क्या है, सेम है. बट मैं क्या कह रहा हूं कि क्या ये वाला रूल यहां पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं. आप क्या कर दो, 5 into 3 which is 15, 4 into 4 which is 16. बिकॉज 16 इज बिगर देन 15, ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा हो गया, खत्म हो गया काम. देखो आप जब DI सॉल्व करोगे ये बड़ा इफेक्टिव हो जाता है आपके लिए. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So probably you understood what is the rule that I'm talking about. The difference between the denominator and numerator, if it is not same, then you should be applying the rule of cross multiplication, right? Now
वी विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। देखो यहाँ पे 4-5 फ्रैक्शन दे के रखेगा और आपसे पूछेगा विच इज द लार्जेस्ट, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट, विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट। ऐसे प्रॉब्लम को अगर आपको डील करना है तो आप क्या करोगे, मैं कहता हूं कि इनको इसी ऑर्डर में रख लो जिस ऑर्डर में देकर रखा हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच इज द बिगेस्ट। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इन दोनों को कंपेयर करूंगा। इन दोनों को कंपेयर किया मेरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से। सो दिस वैल्यू is 9 into 17 and this value is 31 into 3. 31 into 3 comes out as 93 and this value is 153. Obviously 153 is bigger out of these two numbers. Then you will say that okay, this one is the smaller value, this is the larger value, and what is that we are looking for? We are looking for the largest value, so this one cannot be the largest. ये कंपैरिजन यहाँ पे खत्म हो गया, आप समझ गए। Then what I'm gonna do? I am going to be comparing 9 by 31 with 6 by 29 step by step. पहले इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों में से कोई एक निकल के आएगा बड़ा, फिर जो वो बड़ा निकल के आएगा उसके साथ तीसरे वाले को कंपेयर करेंगे, फिर वहां से जो बड़ा निकल के आएगा उसको चौथे वाले के साथ कंपेयर करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोना डू। सो अब यहाँ पे अगर आप ये करोगे ना, 23 into 9 is going to be 207, right? And 31 into 6 is coming out at is what? 186. And because 207 is bigger than 186, you still have 9 by 13 bigger than 6 over 13. So this option is also gone. This is not the bigger one. है ना मैजिक है? अच्छा, अब इसके साथ हम क्या करेंगे? 9 by 31 is still larger. So 9 by 31 will be compared with 4 by 11. Do the cross multiplication. So this value 9 into 11 comes out as 99 and this value comes out as 4. This is 124. Now 124 is bigger than 99 and hence 4 by 11 is bigger than 9 by 31. अब ये वैल्यू गायब हो गई। अब इन दोनों में से कोई होगा लार्जेस्ट। इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है तो आप क्या करोगे, 25 into 4 this comes out as 100 and 11 into 7 this comes out as 77, and because 100 is bigger out of these two numbers, 4 by 11 is going to be larger out of these two and hence the largest of all the fractions that are written on the board. So which one is the largest? देखा आपने कैसे किया, मैंने क्या किया, कंपैरिजन करता गया और मेरा काम बनता गया। अच्छा जी, अगर आपको ये समझ में आता है, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी वीडियो से ना आप एक चीज सीख लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कैसे करते हो, बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लार्जेस्ट। अब आपके पास ये 4-5 फ्रैक्शन दे के रखा है, 2 by 5, 3 by 8, 4 by 9, 5 over 13 and this value, and you have to find out which is the fourth largest. Fourth largest is in the increasing order. You have to find out the fourth number, right? चलो जी, हम क्या करते हैं, पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले पता कर लेते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है यहाँ पे। नाउ 8 into 2 16, 5 into 3 15, so this value is 16 and this value is 15, and because 16 is bigger than this, so 2 by 5 is the larger. 2 by 5 is the larger out of these two. Now you understand this, you can do the mental calculation. Now I have got 4 by 9 and 2 by 5, so 9 into 2 this is 18 and 5 into 4 this is 20. Now this is bigger, so 4 by 9 is the larger of these two values. अब ये गया, अब क्या बच गया आपके पास में, 4 by 9 बच गया। 4 by 9 को आप किससे कंपेयर कर दो, 5 by 13, so this is coming out as 52 and 45, because this is bigger, so 4 by 9 still is bigger of these two values, so 4 by 9 बच गया, 5 by 9 is gone। 5 by 9 के बाद में 4 by 9 को अब आप कंपेयर कर दो 6 by 11 से, this is 44 and this is 54 because this is bigger, so 6 by 11 is coming out as the largest fraction here। चलो जी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन आ गया, तो अब आपको करना क्या चाहिए भाई, 6 by 11 तो गया, क्यों गया ये, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस, so this is number 1। now I'm gonna do the comparison between these two 4। now अब ये ना थोड़ा सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 8 to the 16, so you know that this is bigger out of these two values, so 2 by 5 and 4 by 9। now you have done this, you found out that this is the largest। तो अब इन दोनों में जब आप कंपैरिजन करोगे तो इन दोनों का कंपैरिजन आपको ये बताएगा which is going to be the second largest। so this is 52 and this is 45। 52 is bigger than 45। 4 by 9 is the second largest value, so this value comes out as the second largest value। is that okay?
Now we are left with 1, 2 and these three values. So out of these two values, now you know that which is bigger. This is 16 and this is 15. So this is obviously 2 by 5 is bigger, and then you have got 5 by 13. So 13 into 2, 26, and this is 25. 26 is bigger than this value. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 2 by 5 है ना, 2 by 5 is coming out as your third largest value. It is coming out as the third largest value. Can you do the comparison between these two? 3 by 8 and 5 by 13. So 13 into 3 comes out as 39. 8 into 5 comes out as 40. This is bigger, so this is bigger. So this value is the fourth largest value, and this is going to be the smallest value. अब आप fraction लिख तो सकते हो ना, फटाफट से कैसे लिखेंगे? 6 by 11 is the largest. उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन आ गया? 4 by 9. उसके बाद में कौन सा आ गया? 2 by 5. उसके बाद में कौन सा आ गया? Then you have got 5 by 13, and then you have got the least value over here is 3 by 8. They are asking you which is the fourth largest. Fourth largest तो आप इधर से देखते हो ना. This is the smallest, and then second, and then third. This is the value that you are talking about. और ये सब ना करने की जरूरत नहीं होती. मैं तो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कर रहा था, तो मैंने आपको लंबे तरीके से निकाल के दिखा दिया. अब आप ये समझो ना, अगर आपको फोर्थ लार्जेस्ट चाहिए, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्थ नंबर चाहिए, और यहाँ पे 5 वैल्यू दे के रखा हुआ है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेकंड निकालना है. इसका मतलब आपको लार्जेस्ट नहीं निकालना है, आपको तो सेकंड लार्जेस्ट निकालना है. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. आउट ऑफ दीज 5 वैल्यूज, सिंस यू आर लुकिंग आउट फॉर द फोर्थ लार्जेस्ट, and I say that why don't you find out the second fourth largest, तो second वैल्यू निकाल दो. डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये आपका काम चल गया. तो आप probably अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि ये कितना बढ़िया मेथड है आपके लिए. आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में तो ये बड़ा अच्छा काम करता है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लार्जेस्ट? हाँ जी, फोर्थ लार्जेस्ट दैट वी हैव फाउंड आउट दिस वन. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? कैन यू फाइंड आउट which of these values is the smallest? Pause the video, try to solve this question on your own. So there are 13 and 16. I need to find out which is going to be the smallest. So what is my strategy? I will be comparing the first two. उसमें जो छोटा होगा उसको मैं तीसरे वाले के साथ कंपेयर करूंगा, वहां पे जो छोटा होगा उसको मैं चौथे वाले के साथ कंपेयर करूंगा, and I will be having my smallest value. So when I compare these two values, this is 13 into 19 and 6 into 15. So this is going to be about 16 into 15, 15 into 15, 225, 240, and this value comes out as what? Plus 57, 7. This is 227, and because 240 is bigger than 227, ये वाली वैल्यू हो गई बड़ी. अब आपके पास ये जो भी वैल्यू बड़ी हो गई, इसको तो आप डिस्कार्ड ही कर दो. क्यों डिस्कार्ड कर दो? क्योंकि आपको तो चाहिए सबसे छोटी वाली वैल्यू. सो ये वाली वैल्यू तो मैंने क्या कर दी? डिस्कार्ड कर दी. अब मैं कंपेयर करूंगा 13, 16 एंड 17 by 21, इन दोनों वैल्यूज को. सो what are my values? 13 into 21 and then 16 into 17. So 16 into 17 is what? 256 plus 16, this is 272, and what is this value? So this value is coming out as what? 210 plus 63. So this value comes out as 273. So they are very close. This value comes out as 273, this value comes out as 272. Obviously this will have to be bigger and this one is the smaller. So जो बड़ा है वो हमारे को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये गया. अब मैं क्या करूँगा? स्मॉलर ढूंढने के लिए मैं कंपेयर करूँगा 17 by 21 and 7 by 8 को. So this is coming out as 17 into 8 and 21 into 7. So this is 7, 147. So this value is 136. 136 is smaller than 147. So this is the smallest fraction. प्रॉब्लम ना अगर आपको एक आध बार में समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आप इसको बड़े अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, और ये कर लिया तो फिर आपका काम बच गया. चलो जी. So now can you do this? Pause the video, try to solve this. Which of the following is ascending order, descending order? वो आपको हमेशा एग्जाम में आता रहता है, और मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ना बड़ा सिंप्लीफाइड होता है.
फिर मैं क्या बोलता हूँ कि भाई 11/14 और 16 मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर करूँगा 11, 14 एंड 16/19. So this is going to be what, 209, isn't it? And then this is going to be what, 14, 196 plus 14. So this is 210 and this is 209. Which is bigger? This is bigger. तो ये 16/19 is bigger out of these two. तो ascending यहाँ पे तो दिख रहा है ना? तो जहाँ पे 11/14 पहले आ जाए 16/19 के, वो ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है. आप ये देखो सेकंड ऑप्शन आपका गया, बनी ना बात आपकी. यहाँ पे 11 बाई ये भी वैल्यू पहले आ गई, सो दिस थर्ड कैन ऑल्सो नॉट बी द आंसर. So 11/14 and 16/19 they are in this order. So either 1 or 4th can be the answer. अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, मैंने सेकंड एंड थर्ड कैसे एलिमिनेट किया आपको पता चला. अब इन दोनों को कंपेयर कर दो. अब 16/19 and 19/21. Now what you can do, 16 into 21 and this value is 19 into 19. So 19 into 19 is 361, that you know. And 16 and 20, so this is 320 and this is 336. 336 यानी ये वाला वैल्यू बड़ा है तो ये इससे बड़ा होना चाहिए. कौन सा फ्रैक्शन सही हो गया? पहला वाला फ्रैक्शन सही हो गया. कुछ ज़्यादा काम किया क्या? नहीं किया. कुछ ज़्यादा मेहनत किया क्या? नहीं किया. आपने सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट किया वो टेक्निक सीखने के बाद में. चलो जी, आई होप यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड आउट असेंडिंग ऑर्डर, हाउ टू फाइंड आउट डिसेंडिंग ऑर्डर. वीडियो को पॉज करके अपने आप से लगा लो, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो. किसी का गलत हुआ तो मैं वापस जाके वहाँ पे कमेंट कर दूंगा. दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू. बट व्हाट इज दैट यू विल से दैट, चलो जी पहले वाला ऑप्शन उठाओगे, पहले दोनों को एलिमिनेट करोगे, फिर ऐसे करोगे. जहाँ पे आपको इन दोनों में दिख जाएगा कुछ, यहाँ पे अप्लाई करके देखने की कोशिश कर दो, एलिमिनेशन मार दो, सारे के सारे प्रॉब्लम में आपका काम हो जाएगा. ऐसे ही आप डिसेंडिंग ऑर्डर के प्रॉब्लम लगा सकते हो. एक डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रॉब्लम मैं आपके लिए लगा देता हूँ. सो आई एम गोना सॉल्व दिस वन. मैं क्या बोल रहा है वो पहले वाला प्रॉब्लम, 5/9 and 7/11. So understand this is 55 and this is 63. So 63 is bigger than 55. So 7/11 is bigger and 7/11 अगर बड़ा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया है ना. तो ये वाला ऑप्शन आपका गया. कहीं पे और ऐसा हो रहा है क्या कि 5/9 7/11 के पहले आ गया? देख लो आप, ये भी गया. 5/9 7/11, 5/9 7/11. तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है. एक ही काम, एक ही स्टेप लगाने के बाद में दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा. सो फर्स्ट इज 11/17 and 7/11. So 11 into 11 is 121. 17 into 7 119. So 121 is bigger than this value. And since it is bigger, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तो दिख रहा है आपको, यहाँ से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया. ठीक है जी. क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? ये इन दोनों में भी ऐसे ही हो रहा है. तो इसका मतलब हमारे को ये दोनों चेक करना पड़ेगा. 7/11 and 18 ये चेक कर डालो. सो 15 into 7 105 and this is 88. So this is bigger. If this is bigger 7/11 तो ठीक है जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है. तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो गया 7/11 एंड ये भी सही है. अब आपको इन दोनों में चेक करना पड़ेगा. 8/15 5/9. So this is 75 and this is 72. ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये लास्ट मोमेंट पे जाके गड़बड़ हो गया. तो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता. थर्ड इज नॉट द आंसर. व्हाट इज द राइट आंसर? देन आई डोंट हैव टू चेक द फोर्थ बिकॉज द फर्स्ट सेकंड आर गॉन. थर्ड अगर लास्ट मोमेंट पे गलत हो गया, व्हाट इज गोइंग टू बी माय आंसर? माय आंसर इज गोइंग टू बी द फोर्थ. दिस इज व्हाट आई हैड इन दिस वीडियो. आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे सीखने वाला. तो अगर आपने ये सीख लिया तो आई एम गोना सी यू इन वीडियो नंबर 5, नॉट 4, वीडियो नंबर 5. यहाँ पे ना ये जैसे प्रॉब्लम्स है ना इक्वेशन बेस्ड, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या गलतियाँ करते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोना सी. क्योंकि अगर आप ये वाले प्रॉब्लम देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ यू विल से दैट 5 इज द आंसर. Majority of you, 90-95% of students would say that 5 is the answer. Well, 5 is not the answer. So why 5 is not the answer? What could be the other answer? This is what we are going to see in the video number 5 of the series. So this is where I'm going to see you. Thank you very much for watching this one. Bye bye and take care.